Hi. Oi, so they give access to their job portal, Geeks for Geeks, for free? Yes, complimentary with the course. And you got your job through that? Me and 15,000 others across the world. No way! Oh, yes, Wiz. Don't delay. Enroll now. Geeks learning together. Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. My name is Muskan Agarwal and this is a very special webinar. So before I begin with the webinar, I just want to ensure that I am properly visible and audible to all of you. So yeah, just let me know in the comment section, just give me a thumbs up if I am visible and audible both. I'll just wait for another 1 minute till you guys give me a thumbs up. Yeah. Okay. Cool. Yeah. Okay, I'm properly visible. So I'll quickly tell what this webinar is going to be about. So we have seen generally, there is a lot of doubts in parents that coding kab se karani chahiye. Like they should like allow their students to do coding from like bachpan se ya phir nahi. So we have Jyoti and Chandan with us. So Jyoti is a parent and Chandan is a career counselor. So they are going to interact and Jyoti is going to ask her questions to Chandan and he is going to guide all the parents about and try to resolve their doubts. So without any further ado, just let me add both of them to the stream. Hello Jyoti, hello Chandan. Yeah, hello Muskan. Thanks for inviting us. Thank you so much for doing this. Hello. Yeah, hello. So thank you so much for doing this. So now I'll take a leave and Jyoti, you can take it from here on. Yeah, sure. Yeah. So, hello Chandanji. I can see like lot of times, being a parent coach, I have got lot of queries from parents regarding, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं parents जब बच्चों के करियर की बात आती है, right from the beginning. So I have couple of questions. So I'll just start with first one of that. That most of the time parents are confused and they have the fear to opt for a career selected by a child. How can we guide the parents and the child to validate the potential according to the specific career? बहुत ज्यादा कई बार मिथ्स हो जाते हैं पेरेंट्स के पास कि कैसे वैलिडेट करें कि whether my child is capable for this career or not. Okay. So, very relatable question it is, because nowadays lots of students, lots of parents are not aware about the various available career options. Right. Yes. The thing is that in recent articles also it says in India 93% students and parents are unaware of more than 7 career options. And we have more than 1,000 career options as of now. So अब आप खुद समझ सकते हैं कि पेरेंट्स में अवेयरनेस कितना है और वो किस हिसाब से किस लेवल पे अब करियर सिलेक्शंस करते हैं. So this is very important to understand कि what you need to opt for your career options, and planning needs to be started at school level only. Now the thing is that कि पेरेंट्स जो करियर ऑप्शंस चूज करते हैं या स्टूडेंट्स कहीं से भी करियर ऑप्शंस चूज करते हैं, कहां से उनके अंदर वो इनसाइट्स आते हैं. First of all, that we need to understand that. Of course, parents got to know about the career options through their colleague's son, through their colleague's daughter, what they are pursuing, what kind of career options they are opting. Maybe in our society also, the successful individual, those are living luxurious life, and also we followed them, and parents Yeah. followed them, students followed them, especially also when I'm talking about students. So as of now we are talking about lots of career options are available. We have a gadgets, we have a technology. So students used to search on social media, they used to google it ki what all career options lucrate them. But availability of career options are separate matter, separate thing, and career selection is separate thing. Both are different in terminology, both are different in process.
So we need to understand ki how we need to opt a career option, how we need to opt a right career option for yourself. This is very important. जब हम we belongs to a particular society कि बच्चा यदि मैथ्स में अच्छा है तो हम पहले से डिसाइड कर देते हैं कि एक इंजीनियर पैदा हो गया. That's true. बच्चा यदि Really true. बच्चा यदि बायो में अच्छा है तो हम ये कहते हैं कि बच्चा हमारे घर में एक डॉक्टर पैदा हो गया. We don't bother about the skill set of my kids, whatever. हम उसकी स्किल सेट की बात ही नहीं करते हैं. बच्चा भी आज जो आज का मॉडर्न जनरेशन है, सिंस लाइक लास्ट 8 years आई एक्सपीरियंस सच थिंग. आज का जो जनरेशन है वो इस चीज पे फोकस ज्यादा करता है रादर देन स्किल सेट कि आप कौन सा करियर ऑप्शंस हम लोग ऑप्ट करें जिसमें पैसा हम ज्यादा कमाएं. पैसा आप कैसे ज्यादा कमाओगे जब तक आपका एक राइट करियर गाइडेंस नहीं होगा, एक राइट करियर सिलेक्शंस नहीं होंगे. हाउ यू विल अर्न गुड अमाउंट ऑफ सैलरीज और गुड अमाउंट ऑफ मनी. Now, in my recent experience also, I have seen, like, even I counseled more than 5,000 students as of now, and among them, majority of students I counseled, those are in graduation, maybe first year, maybe second year, maybe third year. Why this kind of things are there? Because कि जब 10th होता है या 12th होता है, we don't seek any kind of career counseling or any kind of guidance. और हम या तो पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में, पीयर प्रेशर में हम करियर ऑप्शंस चूज तो कर लेते हैं कि अच्छा दिस करियर ऑप्शन इज वेरी कॉमन, दिस करियर ऑप्शन में लुक्रेट्स इंडिविजुअल. बट व्हेन यू एंटर्ड into a practical year like graduation, because now graduations are like completely practical mode now, then you start getting the heat of that particular domain, that particular field. एंड एक साल आप कैसे भी निकाल लेते हो, दूसरा साल जाते जाते थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है एंड देन यू फील द हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन, फिर यू गिव अप. देन आपको रियलाइज होता है कि आई शुड गो टू अ करियर काउंसलर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज माई मैसेज टू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स before going for career selection, because in Indian education system, in existing education system, we have a first choice that we are going to opt at level of 11th standard, right? क्योंकि 11th standard में हमारे पास साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का सिलेक्शन होता है. टिल देन बिफोर 10th तक हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो हमें कॉमन पढ़ाई करनी होती है एंड आफ्टर दैट वी हैव अ फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस. So I request to all parents and students, go with expert guidance, go with career counselors, and the right career selection process is to go with psychometric testing, go with expert one. In psychometric, what will happen? Your interest will assess, your personality will assess, your multi-intelligence will assess, your work professional profession orientation will be measured. So all these things will be monitored, all these things will be assessed, and on the basis of that, definitely different kind of external factors also affect individuals separately, because every individual having a different set of external problems, external factors, external things that may affect their life, that needs to be also considered. So this is my request, rather than going with experience, rather than going with your willingness or your societal expectations, you need to consult. बच्चा 10th में जाता है, हमारे कल्चर में हमने देखा है, हमारे सोसाइटी में देखा है, बच्चा 10th में जाते ही हमारे फैमिली में ही कई सारे करियर काउंसलर्स हो जाते हैं. जैसे ही अंकल फोन करते हैं बच्चे को कि हाँ बेटा आप 10th के आगे क्या करना है, आपको मेडिकल लेना चाहिए. मासी फोन करती हैं कि आपको कोई और करियर ऑप्शंस चूज करना चाहिए. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस, not on the basis of students career orientation or their strength, their weaknesses. So this is very important thing ki whether it's a coding, whether it's engineering, whether it's medical, before going to select any career option, because it's a matter of individual's career. क्योंकि एक बार हम जब कोई भी करियर ऑप्शंस चूज कर लेते हैं तो उसको फिर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
और बाद में हम कहते हैं कि पता नहीं हमने कौन सा करियर ऑप्शन चूज करा दिया, या फिर बच्चे ने कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर लिया कि उसे नौकरी ही नहीं मिल रही है, या फिर उसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलता है। एक 10 साल पहले, 15 साल पहले की यदि मैं बात करूं, तो उस टाइम पे पेरेंट्स करियर चूज कर रहे होते थे। आज का ट्रेंड ये है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चे पे छोड़ दिया है, वो खुद करियर ऑप्शंस अपने लिए चूज करेगा, ताकि हमें बाद में कोई ये ना बोले कि आपने पता नहीं क्या कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर। लेकिन माय क्वेश्चन इज अगेन, हाउ योर किड विल सेलेक्ट करियर ऑप्शन फॉर देमसेल्फ? जस्ट ऑफ कोर्स वो भी किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में ही आके खड़ा होगा उसने करियर ऑप्शंस का सिलेक्शन। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट करियर काउंसलर इज नथिंग कि इतना कॉमन चीज नहीं है, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग दैट स्पेसिफिक स्किल्स यू नीडेड. Psychometric plays a very pivotal role in career counseling process and all. So of course, when we talk about career selection, I must suggest to all the students, because as current time, educational structure is also very versatile now. काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर each and every parents and students to go for right career selection with the help of expert and with the help of right career counseling process. That's really true. I agree with you, Chandan जी. पेरेंट्स बच्चों के एजुकेशन में इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अप्रॉक्स इन लैक्स, यू नो, बट दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड Right. फॉर करियर काउंसलिंग. यू नो दैट माइंडसेट नीड टू बी चेंज. तो ये एक अवेयरनेस बहुत Right. ज्यादा जरूरी है इन दिस टाइम. यू नो लाइक देर आर पीपल, यू नो, प्रोफेशनल्स है हेल्प करने के लिए. ओनली थिंग इज यू हैव टू सीक फॉर द एडवाइस, यू नो. तो एक बार अगर आप बच्चे को लेके जाएंगे तो देर इज लॉट ऑफ क्लैरिटी in their skills, interest. Exactly. So parents, it's our request, like don't hesitate, just go and seek counseling as much as you can, because it's a matter of the career for your child. True. Okay, so coming back Very to true. next question is, yeah, how important it is to address the child's query if parent aren't a professional in that field. And you have already answered this query of mine, but still I would love to hear from you. See, this is very important actually. It doesn't matter whether parent are in same profession or not. Even my father is also not in my domain only. But yes, of True. course, now today's generation is completely different as compared to mine when I was student. And currently we have a technologies like even nowadays, every students having their own mobile phones as, accordingly. And of course they are searching a lots of things कि okay, ये career options कैसा है, वो career options कैसे हैं and all. So of course if you if you give answers to students query, right, that is very important for students also to get clarified कि उस करियर उस पर्टिकुलर करियर में होता क्या है, उस कोर्स में होता क्या है. आई कंडक्टेड सो मेनी वर्कशॉप्स एक्चुअली, एंड इट इज जस्ट लाइक दैट कि कई बार मैंने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे भी मैं गया, वहां पे वर्कशॉप देता हूँ. एंड समवेयर आई फाउंड कि बच्चा इंजीनियरिंग के कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है एंड स्टिल दे डोंट नो अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड ऑल. How you go for further career options when you clear your entrance exam? So this is very important to clarify their knowledge, their doubts. और आप उसमें उसको जितना आप doubts उसका clear करेंगे, उसके अंदर वो सोचने की, समझने की कैपेसिटी भी, और जो एक होता है ना टेंडेंसी, वो भी इंक्रीज होगी. इट डजंट मैटर कि उसके फादर का, उसके मदर का बैकग्राउंड क्या है, that doesn't matter. Even I must request to parents also, they need to google it कि okay fine, यदि कोई particular career option उनके mind में आ रहा है तो they can ask. It doesn't matter कि वो engineering है या data analytics है या फिर whatever career option it is. So जितना आप डाउट क्लियर करेंगे उतना अपने आप को एक सेफ जोन में रख के चलेंगे. एंड आई ऑलरेडी आंसर द सेम थिंग कि क्वेरी होना दैट इज द सेपरेट थिंग, अवेयरनेस होना दैट इज द सेपरेट थिंग. आज के टाइम में मेरे बीइंग अ करियर काउंसलर मुझे ऑलमोस्ट सारे फील्ड का नॉलेज है, बट इट डजंट मीन कि सारे फील्ड में मेरा करियर ऑप्शन हो सकता है.
सारे फील्ड में मैं अपना करियर स्टैब्लिश करूं. सो दिस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. अवेयरनेस इज गुड for the future, but you need to have a proper selection process, proper guidance to opt a particular career option for your betterment and for your family betterment, because आज का education it's not so that is actually very costly, as you already mentioned. ये काफी कॉस्टली है, आपको पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना है एंड उसका रिटर्न भी देखना है कि बच्चे को अच्छा नौकरी and all, and of course we badly hit it by pandemic now. So again question remains same कि query आप definitely अपना रखे, you need to get clarified, but yes after that also you need a proper guidance. आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं जा सकते, क्योंकि यदि आप ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे, आज देखिए, आज यदि पेंडेमिक यदि 2 साल से है तो कहाँ गया वो पुराना ट्रेंड. Now we need to create a new trend now अब जो 2 साल पहले जिन्होंने अपना करियर ऑप्शन एक पर्टिकुलर ट्रेंड के हिसाब से सेलेक्ट किया होगा, उनका क्या? अब उनके लिए तो अब कोई ट्रेंड नहीं रहा. सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि गो विथ योर परमानेंट इंस्टिंक्ट, गो विथ योर परमानेंट स्किल्स, दैट इज विथ यू, दैट इज इनबॉर्न्ड विथ यू, and that will always help in any difficult situation, whether it's a pandemic, whether it's not. So yeah, so this is very important कि बच्चों की क्वेरी तो सॉल्व होनी ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनको करियर फर्दर कैरी आउट करना है. क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चा पर्टिकुलर डोमेन में सिलेक्शन डोमेन में चला भी जाता है. फॉर एग्जांपल बीए ही है, एक सिंपल से कोर्स की बात मैं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर बीए इन मैथ्स फॉर एग्जांपल और एनीथिंग, बट उसको ये नहीं पता होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में होगा क्या, उसमें हमें पढ़ना क्या है, चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर वट एवर करियर ऑप्शन, उसको यही नहीं पता होता है कि उसमें मुझे पढ़ना क्या है. अब जब वो एंटर करता है उस फील्ड में, एंटर करता है उस डोमेन में, अब उसे पता चलता है कि अच्छा मुझे ये भी चीज पढ़नी है, दैट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. एंड देन सडनली ही और शी रियलाइज कि नहीं मेरे से नहीं होगा, सो पापा मेरे से नहीं होगा, एंड तब तक क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस बर्बाद. And So it's too late, many, बहुत लेट हो जाता है. yeah. So these are the live examples I have seen actually, and you know so this is very important कि awareness होना बहुत जरूरी है, query handling जरूरी है, साथ के साथ career selection process भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सारी चीजें हैं. Yes, I agree with you. आपने बहुत अच्छे से explain किया. See, as a parents, let us not keep our queries to ourselves, because we have all those professional out there to help you. So, बच्चे का career का सवाल है, go out, seek clarity, and that's the best thing you can give to your child. So now coming back to the True. next question is, there are parents who believe that coding is essential for kids, and there are some parents who think that coding is at early age is not healthy. So what are your views on this? Okay. See, basically we are going through revolution period in our education system. As you already know, even parents must know if they are not aware of it, कि we are going to implement new education policy 2020. In new education policy, it says कि अभी तक का जो हमारा education policy था, that completely focused on academic excellence. और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने वाला है, that is going to be delayed just because of this pandemic. Otherwise it was supposed to implement by 2021 session onward only. So in sorry, so in that particular new education policy, we are focusing on holistic development, we are focusing on holistic development of kids. Now what does it mean, holistic development? You must have a professional approach, you must aware of multi-dimensional development, whether related to your skill set, related to your extracurricular activities. तो आपको सबका knowledge और सबका जो skill set हो आपको पता होना चाहिए. अभी के education system में we are completely focused on maths, physics, chemistry, that's it.
हम सब्जेक्ट्स में ही घूम रहे होते हैं और बस उतना ही हमें पता होता है, उसके अलावा हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, फाइनल ईयर में अच्छा, फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तभी मेरा रिपोर्ट कार्ड अच्छा बनेगा। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट कि आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्किल सेट होना चाहिए, सो दैट वी विल एबल टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑल्सो। And in that particular context, the new education policy 2020 says कि sixth class onward you must have a particular a professional skill set. आपके पास एक professional skill set होना चाहिए. So in that particular context, n number of professional skills, professional programs, professional things are there, and coding is one among them. राइट, कोडिंग भी एक उन प्रोफेशनल स्किल सेट्स में से एक है जो अब करंट डेज में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओनली, इट इज प्रमोटिंग हाईली। बट यस, आई डू अग्री कि जो पेरेंट्स का कंसर्न है कि कोडिंग अर्ली स्टेज में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड इज दैट like healthy for their health also or not and all. So in that particular thing, let me go through the coding first. कि coding है क्या actually? Basically coding is a computer language that used to develop apps, website and softwares, right? So these things are definitely lucrates every individual nowadays, because we are on era of pandemic, so everything is on online. हम लोग आज ऑनलाइन पे बैठे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी कहीं ना कहीं कोडिंग से डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, राइट? सो नाउ इट सीम्स कि कोडिंग अब हमारे डे टू डे लाइफ में एंटर कर चुका है, राइट? कोडिंग हमारे डे टू डे लाइफ में एंटर कर चुका है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक प्रोफेशनल स्किल्स होना चाहिए फॉर योर फर्दर बेटरमेंट एंड योर थॉट प्रोसेस। आपके थॉट प्रोसेस के लिए भी ये इस चीज का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सो दैट कि अब आपने कोडिंग सीख लिया तो आपका जो फर्दर जो प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी आप स्कूल एज में यदि कोडिंग सीख रहे हो तो आप उसको स्लाइटली एडवांस लेवल पे आप कैरी फॉरवर्ड करके चलोगे। सो जब आप कैरी फॉरवर्ड करके चलोगे तो ऑफ कोर्स आपका एक ऑलरेडी डायमेंशन सेट है कि आपने ये चीजें सीखी है, तो चाहे आज कल के डेट में आप फ्रीलांस मोड में या फिर उसको आप एज अ प्रोफेशन अडेप्ट करोगे, तो वो आपके लिए एक लॉन्गर टाइम पे हो जाएगा कि आपने कोडिंग सीखा है तो आप इसमें अच्छा करियर डेवलप कर सकते हो। एक बच्चा यही चीज आपको ग्रेजुएशन में सीख रहा है और एक बच्चा स्कूल लेवल से सीखता हुआ आ रहा है, दोनों के लेवल में, दोनों के थॉट प्रोसेस में, दोनों के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। सो दैट्स द रीजन वी ऑलवेज से एक्सपीरियंस मैटर। तो जिसका 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों के प्रोग्रामिंग में, दोनों के करियर एडेप्टेशन में बहुत बहुत अंतर आएगा। सो ऑफ कोर्स this is essential, right? But yes, there is a nothing to worry। और अर्ली स्टेज क्या होता है? अर्ली स्टेज इज लाइक कि स्टूडेंट जब ग्रास्प करना स्टार्ट करे, और ये स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जब हम स्कूल एज की बात करते हैं तो बच्चों में ग्रास्पिंग नॉलेज, ग्रास्पिंग पावर, नॉलेज एक्विजिशन पावर, इन सब चीजों में ये सब चीजें बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू एडल्ट वन, एज कंपेयर टू टीनेज। सो ऑफ कोर्स आप इस लेवल पे जितना आप इनकलकेट करोगे नॉलेजेस, उतना उनके लिए बेस्ट होगा। और आज हम लोग पेंडेमिक के टाइम में जा रहे हैं, गोइंग थ्रू पेंडेमिक के टाइम में इवन हमने देखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है, क्योंकि इट इंक्रीज योर स्क्रीन टाइम ऑल्सो, इट इंक्रीज योर मेनी अदर थिंग्स। आपका फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रहा है अभी इस टाइम पे, बट पेंडेमिक के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी तो देख रहे हैं। आज के टाइम में एक और पैटर्न देखने को मिला है, गेमिंग। बच्चों में, चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, सेकंड क्लास का बच्चा हो, एक्सटेंसिव गेम्स खेलते हुए देखने को मिला है, जैसे गेम्स लाइक पबजी एंड फ्री फायर्स लाइकवाइज। तो आप उनको कंस्ट्रक्टिव वे में इंक्लूड करो ना। इफ यू इंक्लूड इनटू अ पर्टिकुलर थिंग कि आप ये चीज कर लो, इसमें आपको एक कंस्ट्रक्टिव वर्क भी मिलेगा, एंड में आपको रिजल्ट भी मिलेगा। गेम खेल के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना है। सो आप कर सकते हो, देयर इज अ नथिंग हार्म इन इट कि आप उस चीज को, बट हाँ, एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर एज, एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर
क्राइटेरिया कि आप उसके बाद उस चीज को करो, so that will be always welcome aspect of thing. Yeah. Yeah. And sometimes, most of the time, parents also have that query, programming at an early age can cause a huge damage to a child. वो उनका brain development इतना होता नहीं है, to parents have that notion. So what are your views about it? कि when we talk about fifth or sixth standard child getting into coding, so what are your views? Like, is it true that it causes damage to the child? Because parents are very curious, over with this coding. See, ma'am, the question is of course the early age. अब यहाँ पे हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अर्ली एज है क्या, Yeah. वो अर्ली एज Suppose है if क्या. we फर्स्ट talk, ऑफ ऑल वी yeah, नीड टू fifth, sixth डिसाइड दैट. standard, yeah, राइट. सी, कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करते हैं कि फ्रॉम क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड से आप yeah, कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हो. दैट इज यहाँ पे एक कंसर्न है. बट अर्ली yeah, एज इज मीन्स कि सिक्स्थ क्लास ऑनवर्ड. एंड इवन वी हैव अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल्सो, जो कहता है कि सिक्स्थ क्लास ऑनवर्ड आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए. इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए या सेकंड स्टैंडर्ड से ही होना चाहिए. सो अर्ली स्टेज मीन्स हेयर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यस, यदि आप बच्चे को फ्रॉम क्लास 1 या क्लास सेकंड से यदि आप प्रोग्रामिंग में धकेल रहे हो तो ऑफकोर्स दैट कॉज डैमेज. लेकिन यदि आप बच्चे को सिक्स्थ ऑनवर्ड या फिर सेवेंथ ऑनवर्ड यदि इनकलकेट करते हो इन सब चीजों में, उनको इन्वॉल्व करते हो इन सब चीजों में, तो of course that will be the boon for them, and definitely they will learn quite well in that particular thing. क्योंकि सिक्स्थ और सेवेंथ स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स का जो एक माइंडसेट भी होता है, एक अवेयरनेस भी होता है, एक पर्टिकुलर लेवल पे डेवलप हो चुका होता है. उसे पता होता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है. उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी आ जाता है, सेंस ऑफ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज भी आ जाता है. उसे पता होता है कि वो उसको करना क्या है. बट आप true. बिफोर सिक्स आप यदि उस चीज को इंप्लीमेंट करते हो तो दैट डेफिनेटली कॉज डैमेज. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट पेरेंट्स की इवन बिफोर दैट, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मेनी किड्स, they are playing games and they are using huge screen time, they are spending huge screen time at a very early stage, that is in nursery or anything. So I request to them also ki please stop giving mobile phones except classes. तो आप उनको मोबाइल फोन्स पे जितना हो सके रिस्ट्रिक्ट करें. And yeah, of course 6th 7th onward you can carry on with this particular thing. So early age means class 6th or 7th onward it will be okay, else it cause damage. Yeah, I'm sure all our viewers are getting better clarity with you, from you. So, what positive and negative effect does programming have on child? Are there any negative? We know positivity आगे जाके उसका expertise हो जाएगा, his skills are going to enhance. But are there any negative effect also of programming? Would love to hear from you. See, even positive aspects is also very much more what we thought of कि उसका technological aspects तो अच्छा हो ही जाएगा. But जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको सबसे पहले ना थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझना पड़ेगा यहाँ पे कि व्हाट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट. न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट. Okay. एंड आपको ये भी चीज समझना पड़ेगा कि जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तब से इवन दिस इज माय एक्सपीरियंस कि तब से मैंने देखा है कोडिंग वाज इन ह्यूज प्रमोशन. जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उस टाइम से पहले भी था, बट उसके बाद से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बाद से काफी रिगरस प्रमोशंस मैंने देखे हैं. नाउ द थिंग इज दैट कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि वी नीड टू इनकलकेट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन, we need to inculcate problem solving skills among student. So here जब इन सब चीजों की बात आती है तो कोडिंग विल बी वन ऑफ द ग्रेट टूल, वन ऑफ द ग्रेट स्किल दैट विल enhance these skills also among students. So अब
जनरली कोडिंग होता क्या है? कोडिंग जनरली, अब मैंने बोला ना, हम आगे की चीज बात करते हैं कि अच्छा ऐप बन गया मेरा, वाओ, कोडिंग से मेरा ऐप बन गया, अच्छा वेबसाइट बन गया। हम लोग एंड यूजर हैं, तो हम लोग बस एक वेबसाइट का एक एक्सटर्नल ब्यूटी देखते हैं कि अच्छा कितना सुंदर वेबसाइट डेवलप हुआ, कितना ब्यूटीफुल ऐप बन गया एंड ऑल, बट उसके बिहाइंड में जो उसके जो पीछे जो बैकएंड पे जो काम चलता है, कोड, अब ये चीजें इतना रिगरस और इतना एक्सटेंसिव होता है, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस कि अच्छा ये कोडिंग यहाँ पे डलेगा तो इस फर्दर डिजाइन कैसा बनेगा, यदि ये चीज ये कोड डलेगा तो आगे फर्दर क्या सॉल्यूशन मिलेगा मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। सो सी, कोडिंग विल डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑल्सो, कोडिंग विल डेवलप योर इवन क्रिएटिविटी ऑल्सो। अब क्रिएटिविटी से ही तो आप जितना सुंदर, जितना ब्यूटीफुल वेबसाइट और ऐप डिजाइन करोगे, वो कहां से आएगा? वो आपके क्रिएटिविटी स्किल्स से ही तो आएगा, और अपने क्रिएटिविटी स्किल्स को आप कोडिंग लैंग्वेज में आप उसको इंटरप्रेट करोगे। So that will enhance your creativity skills also, problem solving skills also, critical thinking skills will add, and of course career prospects, क्योंकि जब आप फ्रॉम बिगिनिंग से यदि आप इस चीज को सीखोगे, इस चीज को समझोगे, तो आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना आप सीरियसली इस चीज को आप अपने करियर में, अपने प्रोसेस में अडेप्ट करोगे। बट हाँ, जब आप स्कूल टाइम पे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर इन स्कूलिंग, यू हैव टू गिव अ प्रॉपर टाइम टू योर स्टडी ऑल्सो। इट डजंट मीन, जब मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो आप टोटल का टोटल इन्वॉल्व हो जाओ कोडिंग में ही। No, it should not like that. You have to give your complete attention towards your academics also. वहां पे आपको 100% even 90% attention देना है, and at schooling time, schooling जो लेवल है आपका, उस टाइम पे आपको इन सब चीजों के लिए केवल 10% ही टाइम देना चाहिए, या 20% टाइम देना चाहिए, because that is the additional skill that you are learning. It's not your core learning. Core learning will be different thing. Now the negative effect, of course, it will increase your screen time. It will reduce your physical activity also, if you go with extensive one. यदि आप Yes. एक्सटेंसिव, यदि आप दिन रात, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है कि कई बार उनको इंटरेस्ट होता है तो गेम खेलने बैठ जाते हैं, तो दिन दिन रात रात गेम ही खेल रहे होते हैं, रात भर गेम खेल रहे होते हैं, और इन सब चीजों में उनका पोस्चर भी, बैठने का पोस्चर, उनको सोने का पोस्चर में भी बहुत प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। किसी का गर्दन अकड़ जाता है, किसी का हाथ अकड़ जाता है। ये फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं देखने को, especially among children. So see, the thing is that learning is good, but extensive use of technology will also give you a lots of problem. Even extensive use will lead to anxiety, depression also. कई बार बहुत बार इवन सोशल डेवलपमेंटल डिलेज भी होते हैं। आप प्रॉपरली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो, सोशली आपको जो मिक्सचर होता है वो नहीं हो पाता है, इमोशनली ब्रेकेज हो सकता है, हो जाता है कभी कभी। हम अपने आप को लोनली फील करते हैं, क्योंकि जब हम कोडिंग वगैरह या प्रोग्रामिंग वगैरह में बैठ जाते हैं तो टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं लगता है, एंड सोशल इंटरेक्शन वहां पे इंटरप्ट होता है। और जब सोशल इंटरेक्शन इंटरप्ट होगा तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी डिले हो जाता है कई बार, एंड दैट इज साइकोलॉजिकल प्रोवन ऑल्सो। सो इन सब चीजों को हमें प्रिवेंट करने के लिए जो चीजें आती है कि आप इन सब चीजों को रिड्यूस कैसे करोगे, निगेटिव एस्पेक्ट्स को आप रिड्यूस कैसे करोगे। सो ऑफ कोर्स जब हम रिडक्शंस की बात करते हैं तो सोशल डेवलपमेंटल के लिए आपको उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बोली कि इट इज नॉट, यू शुड नॉट गिव यू 100% वेटेज टू दीज पर्टिकुलर थिंग्स। आपका जो मेन स्ट्रीम है, मेन चीज जो आपको अभी करना है वो आपके लिए क्या है, स्कूलिंग है। आपके लिए जो एकेडमिक एक्सीलेंस है एंड अदर थिंग्स है, ये आपका एडिशनल स्किल्स है। तो आप इसको एक प्रॉपर रूटीन बनाएं कि आपको 1 घंटे ही इस चीज को देना है या 2 घंटे ही देना है। दैट विल रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम ऑल्सो। अब स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगा तो आपका जो आई की जो हाइपर जो एक टेंशन होता है वो रिड्यूस होगा।
उससे आपके जो आंख खराब होंगे। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि इवन छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल के बच्चों को स्पेक्स लगा हुआ है। सो इन सब ये सब रीजन ही है, सबसे बड़ा रीजन है स्क्रीन टाइम का। तो ये आप रिड्यूस कर सकते हो एंड प्रमोट इंडिविजुअल कि बच्चा जितना फिजिकल एक्टिविटी करेगा, मैंने पहले ही बोला कि इन सब को रिड्यूस करने के लिए, इन सब को रेस्क्यू करने के लिए, ये जो भी निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। बीइंग अ पेरेंट यू नीड टू ड्राफ्ट अ पर्टिकुलर रूटीन। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा छुट्टी के दिन 10 बजे उठ रहा है और स्कूल के दिन 7 बजे सुबह उठ रहा है। ऐसा नहीं कर सकते आप, अदरवाइज दैट अफेक्ट देयर रेगुलर रूटीन ऑल्सो। फिजिकल एक्टिविटी आप करवाएं, बच्चों को फिजिकल गेमिंग में भी लगवाएं। अभी पेंडेमिक में है तो आप पेंडेमिक के चक्कर में आप बाहर नहीं भेज सकते हैं, तो आप जो भी माइंडफुल एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशंस हो गया, फिजिकल एक्सरसाइजेस एट होम आप कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में जिम वगैरह भी बंद है या फिर पार्क्स बंद हैं, गेम्स बंद हैं, तो आप घर पे फिजिकल एक्सरसाइजेस करवा सकते हो। एंड अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम parent and also to include your child into some household work also. So that will give them a learning towards कि how आपको सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, सोसाइटी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। इट डजंट मीन कि आपने 90% लाना है तो आपने कुछ सोशल एक्टिविटीज आपको सीखना ही नहीं है। सो ये सब चीजें आप जितना, हर चीज का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, और जब तक आप रूटीन में नहीं उसको कन्वर्ट करेंगे तब तक ये जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है आता रहेगा। एंड अगेन दिस इज गुड फॉर एवरीवन, दिस इज गुड फॉर स्टूडेंट, दिस इज गुड फॉर पेरेंट, बट एवरीथिंग नीड्स टू बी अ प्रॉपर रूटीन। और रूटीन में 2 घंटे 3 घंटे आप मैक्सिमम दो, मैक्सिमम, क्योंकि आज के टाइम में आप क्लासेस भी आप ऑनलाइन ले रहे हो तो वो स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली 5 और 6 आवर्स का जो स्क्रीन टाइम है वो आपका चल ही रहा है। साथ के साथ आप कोडिंग भी आप यदि फॉर एग्जांपल करोगे तो कोडिंग के लिए भी आपको अनदर 1 आवर 2 आवर आपको चाहिए। तो इट्स ऑलरेडी लाइक ऑफ कि 7 8 आवर्स का और 9 आवर्स का आपका स्क्रीन टाइम हो रहा है। तो you need a proper relaxation time, proper free time and proper physical activity you need to involve into it, so that will help you a lot while rescuing negative ones, negative effects among with the help of this particular programming. या वेरी वेल एक्सप्लेन सर कि हमें ना एक बैलेंस करना सीखना होगा बच्चों के लाइफ में। या वी कैन नॉट गेट ऑन होल्ड ऑन एवरीथिंग सो पेरेंट्स जस्ट सीक फॉर बैलेंसिंग, राइट प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बच्चे के लाइफ में। एंड अनदर क्वेश्चन विच आई केम अप विद, लाइक व्हाट करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर चाइल्ड एज ही कंटिन्यूज टू लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम क्लास 8? सो व्हाट आर द ऑप्शंस सर? वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। Okay, see, when I'm talking about programming, right, of course आप 8th स्टैंडर्ड से या 7th स्टैंडर्ड से लर्न करना स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग, तो लाइक आज का जो एक काफी जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड कि काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, काफी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो जो एक मिनिमम जो पैरामीटर्स हो गया है कि आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए टू गेट अ गुड जॉब, right? So of course when you start learning coding from 8th standard onward, so आप ग्रेजुएशन में अपना एक स्पेशलाइजेशन ड्राफ्ट कर सकते हो। You have to go for particular specialization. Even there is another career options that you can select after 10th also. After 10th के बाद आप बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आप एक पर्टिकुलर कोर्सेज ऑप्ट करके आप अपना करियर ऑप्शंस जो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो स्पेशली फॉर कोडिंग, जब आप कोडिंग में फॉर एग्जांपल यदि आप कोडिंग में आप अपना करियर ऑप्शंस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, सो देयर आर लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल एट प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स। जब आप प्रोफेशन में एंटर करेंगे, सो लाइकवाइज वेबसाइट वेब डेवलपर यू कैन वर्क फॉर, ऐप डेवलपर you can work for, software developer you can work for, and then of course game developer you can work for, and data scientist you can work for, and computer system analyst you can work for,
of course you can accelerate your career in engineering part also, like computer science, जो हम लोग computer developers की बात करते हैं, sorry, software developers and all. So see, आज के time में even we are into the technological era, I can say. So आप का जो करियर ऑप्शन है हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्री में योर करियर इज देयर. सो दी, ये तो मैंने जो करियर ऑप्शंस आपको बताए वो आपको एक ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस, मैंने नाम जो एक तोते की तरह होता है ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये चीजें मैंने आपको बताई. लेकिन जो करंट जो टेक्नोलॉजिकल एरा है, करंट टेक्नोलॉजिकल एरा इज नॉट अ सिंगल बिजनेस, नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री इज लेफ्ट बिहाइंड विथ कोडिंग. हर एक इंडस्ट्री, चाहे आप, इवन आई एम इन काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री, यू आर इन कोचिंग इंडस्ट्री एंड ऑल. सो एवरीवन नीड्स अ काइंड ऑफ कोडिंग असिस्टेंस, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग चाहिए मुझे, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, एसईओ चाहिए, एवरीथिंग यू नीडेड. एंड इन सब चीजों के लिए आपके पास कोडर्स होने बहुत जरूरी है, वेबसाइट डेवलपर्स होने बहुत जरूरी है. सो ऑफ कोर्स एवरी इंडस्ट्री नीडेड अ ह्यूज coders in different format, in different profile. So huge career options are there. You need to accelerate and you need to identify your domain also, like if I talk about career options, graphic designer, प्रोडक्ट डिजाइनर, एनिमेटर्स. अभी एनिमेटर्स का इतना ह्यूज डिमांड है, इतना ह्यूज डिमांड है. इवन कार्टून चैनल्स हैं, या फिर इवन बहुत every industry, every company demanding animated videos for their promotional activities. And abhi to digital marketing is one of the highly anticipated career option for coders, I can say. So huge career prospects are there. So yeah, I mentioned some of them. Yeah, I think you have mentioned a lot. I'm sure there is a lot of clarities for our viewers. Now, how much does programming mentally helps our child? Okay. See, as I told you already in last to last question, when I'm talking about mentally help, right, you need to have a proper routine work, right? क्योंकि excessive किसी भी चीज का यूज होना, नॉट फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, नॉट फॉर योर थिंग्स, क्योंकि आप जब एक्सेसिव यूज करोगे इट विल टर्म्ड एज अ एडिक्शन, राइट? एंड एडिक्शन किसी चीज की भी अच्छी किसी चीज के लिए भी अच्छा नहीं होता है. सो ऑफ कोर्स एज आई ऑलरेडी मेंशन कि programming or coding will help you in building your creativity skills, problem solving skills, and of course critical thinking skills that will enhance among you. And also जब आप ये सब स्किल्स डेवलप करते हो तो समटाइम्स आप उस चीज में इतना अपने आप को इंटरेस्टेड फील करते हो कि आपके अंदर जो एक बैक एंड में जो भी आपका एक स्ट्रेस चल रहा होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, तो यू एंजॉय डूइंग दीज पर्टिकुलर थिंग. तो आपका वो भी एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में भी काम होता है इस चीज का. सो ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू लॉट इन मेंटली, बट अगेन आई एम टेलिंग यू इन प्रॉपर रूटीन वर्क. एक्सेसिव नहीं होना चाहिए. एक्सेसिव होगा तो फिर वो दैट कॉज अ प्रॉब्लम ओनली, दैट कांट गिव यू अ बेनिफिट, दैट कांट गिव यू अ रिलैक्सेशन, दैट विल गिव यू अ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ओनली. बट यस, प्रॉपर ऑर्डर नीड्स टू बी डन प्रॉपर, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जब हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स में भी बहुत सारे इंजीनियर्स को देखता हूँ, बहुत सारे डेवलपर्स को देखता हूँ, they feel so anxiety, they feel so exhausted after spending 6 hours or 7 hours of screen time. I'm talking about adults. Then imagine ki what should be the condition when we are talking about students or kids. So definitely we need a proper channelization, proper routine work for benefits. And of course what I mentioned, so these are the things, because that will help you help to develop logical aspects also. क्योंकि आप जब कोडिंग कर रहे होते हो तो काफी सारी चीजें लॉजिकल भी डेवलप होती है, लॉजिकली भी आप उस चीज को करते हो, एनालिटिकली भी उस चीज को थॉट करते हो कि इसको कैसे करना है. सो ऑफ कोर्स दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट एंड दैट विल गिव यू अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स also. True. So again, I have a question that there are myths that state that programming makes students emotionally distant. Do you think it can be true? Because कई बार हो जाता है जो coders होते हैं,
love to be isolated, उनकी एक कोई emotional दुनिया से वो मतलब people feels they are quite of isolated kind of personality या फिर इतने emotionally connect नहीं होते. So how true is that, sir? सी अभी मैंने जब निगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात करी थी तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि इमोशनली अनस्टेबिलिटी आती है, आ बट सकती अगेन है. द थिंग इज दैट कि जब हम इमोशनली डिस्टेंट की बात करते हैं वो कब आता है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, क्योंकि वी बिलोंग्स टू इंडियन सोसाइटी एंड पेरेंट्स का भी होता है कि जब बच्चा एक ही काम कर रहा होता है या फिर एक ही चीज में इन्वॉल्व होता है तो समटाइम्स चाइल्ड गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो Yeah, that's कि true. आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे, आप दिन भर क्या करने में लगे हुए हो। तो क्रिटिसिज्म आपका एक अलग लेवल हो जाता है, एक अलग ही माइंडसेट आपका हो जाता है कि यार क्या सच में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या सच में मैं चीजों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे पापा कह रहे हैं या फिर जो मेरा फ्रेंड कह रहा है। तो एक क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपका इमोशनली डिस्टेंट जो बच्चे हो जाते हैं। सो क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी देयर। अनदर थिंग इज दैट यू राइटली मेंशन कि बच्चा कोडिंग कर रहा होता है, प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, अकेले बैठा हुआ है। तो सी सोशल इंटरेक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एज आई ऑलरेडी मेंशन इन लास्ट क्वेश्चन वनली कि इवन प्रोफेशनल्स को भी मैंने देखा है कि दे यूज टू बी एग्जॉस्ट आफ्टर 7 or 8 hours टू स्पेंड एट स्क्रीन। तो आपका एक सोशल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, चाहे कलीग्स के बीच में। यू नीड अ प्रॉपर रेस्ट टाइम ऑल्सो, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सोशल टाइम ऑल्सो। लेकिन यदि आप वही चीज आप एक्सटेंसिव करोगे, एक्सटेंसिव टाइम देने लगोगे, तो धीरे धीरे आप क्या होता है ना, सोसाइटी से दूर चले जाते हो, आप डिस्टेंट होते चले जाते हो। और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो आप ना अपने मम्मा से बात कर रहे होते हो, ना आप अपने बहन से बात कर रहे होते हो, ना अपने टीचर से बात कर रहे होते हो, ना आप कलीग से बात कर रहे होते हो। तो फिर वहां पे क्या होता है कि सोशल डिस्कार्डिंग, वो डिस्कार्डिंग फैक्टर आने लगती है। आप किसी के साथ फिर कोलैब नहीं कर पाते हो, तो अगेन दैट विल गिव यू यू नो इमोशनल अनस्टेबिलिटी। और फिर जब बाद में आपको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है, कोई एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग मी, तो वहां पे फिर आप ये फील करने लगते हो कि हो क्या रहा है मेरे साथ। एंड देन यू डोंट हैव अ प्रॉपर टेंडेंसी कि आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करो। आप गुस्से में भी आप हंस रहे होते हो, हंसने खुशी के टाइम पे भी आपको फियर हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें कॉजेज है इमोशनल डिस्टेंट प्रोसेस के। तो वी Yeah. हैव अ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, प्रॉपर टाइम टेबल फॉर एवरीथिंग। और बच्चों में सबसे ज्यादा इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो रूटीन आप अभी फॉलो करोगे ना, वही सेम चीज वो बच्चा जब एडल्टहुड में आएगा, टीनेज एडल्टहुड में जाएगा, तो उसी चीज को और भी सीरियसली लेता चला जाएगा। क्योंकि पापा ने तो मुझे कभी नहीं कहा इस चीज के लिए, देन व्हाई शुड, जब आज मैं एडल्ट हो गया, जब मैं डिसीजन मेकर अपने लाइफ के लिए हूं, जब पापा को सही था तो मेरे लिए भी सही है। तो बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, we need to think about these things and we need to give a proper time for everything। बच्चा इमोशनली भी अनस्टेबल नहीं होगा, सोशली भी डिस्कार्ड नहीं होगा, एंड वो जो एक पर्पस है लर्निंग प्रोसेस का, वो भी अचीव हो जाएगा। Yeah, I really appreciate strike of the balancing करना सीखे अपने life में, because that is the key to success, I think, for everybody, parents and child. So my last question True. is, sir, what if a child is interested in arts, and will programming Hmm. will still benefit him or her as an essential skill? ओके, सी द सोसाइटी वी बिलोंग्स टू, जहाँ पे कि हम कहते हैं कि इफ आई ऑप्टेड साइंस आई विल बी सुपेरियर इन द सोसाइटी। Yeah. But in recent trend, it is like humanity, arts. Now we pronounce arts as a humanity. Ab, Humanity. right now in current context, humanity has a huge career options, huge, and respectable jobs also. Respectable professions are there, and huge development I have seen in recent 5 or 10 years in humanity field. And when I'm talking about coding,
कोडिंग डजंट मीन कि आपके पास साइंस स्ट्रीम ही होना चाहिए, आपके पास मैथ्स हो काफी है। और मैथ्स इज नॉट रेप्लिकेट कि आपके पास साइंस ही हो, एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस आर देयर जहां पे कि आप मैथ्स है आपका लेकिन आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे नहीं हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग Yes. अबाउट कोडिंग एंड इट मैटर्स ऑफ आर्ट स्टूडेंट, so of course huge career options are there. Of course few career options may be barrier for those students, क्योंकि जैसे engineering हो गया आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आप आर्ट्स में चले गए हो, आर्किटेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप साइंस से हो गए। लेकिन हाँ, अनदर विंडो आपके लिए खुला रहता है क्योंकि आर्किटेक्ट के लिए, आर्किटेक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए। तो इवन आपके पास मैथ्स भी है तो आप दे सकते हो। सो अदर ऑप्शंस आर लाइक, आप जब डिजाइन, हम जब डिजाइन की बात करते हैं, डिजाइन डोमेन, देयर आर एन नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन इन डिजाइन फील्ड आर देयर, लाइक ग्राफिक डिजाइनर, देन आपका प्रोडक्ट डिजाइनर हो गया, then UFX, VFX specializations are there in design field. Animation is there जहाँ पे कि आप बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। देन ऑफ कोर्स वीडियो गेम डिजाइनर्स हो गए। सो सी, इट्स नॉट लाइक कि आपका आर्ट्स है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो या फिर ये पर्टिकुलर डोमेन में नहीं जा सकते। ह्यूज करियर ऑप्शंस आर देयर, huge career options are there that you can carry on. And you, but yes, I must request you parents, keep your eyes open. And because in Indian education system, every year lots of career options used to be implemented in our education system. And some of the career options needs to, uh, um, uh, develop, that is in development mode also, development phase also. So if you open your eyes, definitely you will have a lots of career options, whether you are in commerce, whether you are in arts, whether you are in science. But it matters of your awareness, your matter of your, seriousness towards a particular field. यू कांट टेक इट कैजुअली कि अच्छा जो हो गया सो हो गया, जो मैंने ले लिया अब क्या करूं। देयर इज अ नो, नथिंग इज लाइक अब क्या करूं, ये कोई टर्म नहीं होता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चों से संभल नहीं रहा होता है या फिर इंडिविजुअल से संभल नहीं रहा होता है, वो वहीं पे गिव अप कर देता है कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा। व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग, you will be not a successful individual in your future as well. You should not surrender yourself. You should always put yourself into a learning mode, whatever domain you are into. So this is what the all about the answer of this question, ki it doesn't matter you are in arts stream, whether you are in science stream, huge career options are available in field of coding when you will enter into a professional life. Yeah. Thank you so much, sir. I think our viewers have got very much better clarity about coding and the options available for career selections from you, sir. Also, I'd like to take few of the questions from the comment section. Mostly, sir, you have answered all the questions, Sorry, but still, can you repeat again? yeah, yeah. So, like, there are some questions in the comment section I'd like to take. Most of the questions you have already answered, but still, if there are one, two questions I'd like to take. Yeah. So, there was one question that my kid is interested in sports. How can I inspire him to start coding? Chanda sir, you can take that. Chanda I'm not sir. able to listen you, Muskan. Can you repeat again, please? Because your Okay. voice is very much disconnected. Okay, okay. So Ankit has asked that my kid is interested in sports. How can I inspire him to start coding? Again, your voice is very much breaking. Okay, can I, Yeah, am I audible, sir? Can I, okay, I think there is some no, network issue. yeah, yeah. I'll just connect with him. He just give us 2 minutes, guys. He'll, rejoin us. But I think he already answered it that it doesn't matter what field you are in. Like just basic Yeah, mathematics is required, and you can. But if your child is in sports, I think you should not pressurize him or her to get into coding. Only if he's interested, then only. yeah. Yeah, okay, he's back.
Yes, sir. So, sir, Okay, am I audible? my kid is interested in sports. How can I inspire him to start coding? See, when I'm talking about sports, right? Nowadays, sports is also one of the very demanding currently. पहले क्या होता था कि कुछ एक दो ही स्पोर्ट्स होते थे हमारे पास. आज के टाइम में lots of sports are there. Those are promoting heavily. चाहे आप कबड्डी की बात करो, चाहे आप हॉकी की बात करो. Lots of campaigns already started at national level. ISL are there, IPL is there, Pro Kabaddi League is there. So see, the thing is that when I'm talking about coding in sports, so of course, as I already mentioned everything in a previous lecture, also previous questions also, like we need a proper promotional activities for a particular things, राइट. चाहे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें आज के टाइम में, एंड चाहे हम किसी भी प्लेयर्स की बात करें, चाहे तो लाइक यू नीड अ प्रॉपर ब्रांडिंग, प्रॉपर प्लेटफॉर्म. एंड प्लेटफॉर्म्स कहाँ से डेवलप होंगे, प्लेटफॉर्म कहाँ पे डेवलप होगा? ऑफ कोर्स दैट विल बी वाया कोडर्स ओनली, that will be via programmers only. So of course huge career options are there, and of course जितना आप sports को promote करोगे, जितने स्पोर्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ऑफ कोर्स करियर ऑप्शन विल इंक्रीज ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग. पहले हमने देखा था कि लाइक व्हेन आई बॉर्न, when I grew, so I have seen only Sachin Tendulkar in cricket. Now we have seen like lots of stars in kabaddi also, lots of like even in badminton Saina Nehwal we have seen. So like n number of sports are promoting day by day. So जितना scope हमारे पास आएगा, of course उतना उतना ज्यादा हमारे पास career prospect बढ़ेगा, उतना हमारे पास career options increase होंगे, and of course coders and promoters, programmers will get a kind of career options in that particular thing, to manage platform, manage social media platform, manage their brand values and all. So of course huge career option will increase in sports also, and abhi upcoming mein bhi होने वाला है. Right. Yeah, that is really true. I hope your question is answered, Ankit. So, as I can see, most of the questions are repetitive. We have already answered all the questions. You guys can just go through the webinar from the start, and like all the questions Jyoti has already asked, Chandan sir. So thank you so much for joining us, sir. I believe all the parents will काफी help होगी उनकी to guide their child. Even I am a student, so I got to learn a lot from like whatever questions you have answered. So thank you so much, sir, for doing this. Okay, his video. I think there are some internet connectivity issues. Yeah, I think there is some drop in net. Yeah, just one second. Let's just wait for some time. Maybe he'll join us. Apart from Yeah. that, I'd like to tell you all that Jyoti has made a very special presentation for all of us, and she will be showing us the presentation. Yes, so just let's wait for 30 to 40 seconds if Chandan sir joins us. Otherwise, we can start with the with the presentation that you have prepared. Yeah, sure. Let's wait for him if he gets back. Cool. Yeah. I'll By just the try time to. I can just share my screen, Muskan. Yeah, sure, sure, Yeah, definitely. I'll just connect my screen. Okay. Yeah. Okay, it is visible. Guys, if the screen is visible, please just give us a thumbs up in the comment section. If the screen is properly visible to all of you. Yeah, I think it's visible. Yeah. Okay. I think there are some connectivity issues from Chandan sir's end. I think you can start with the presentation. Yeah. Can you just see the slideshow preview, Muskan? Because No, actually, like the entire no. screen is being presented. Okay. Just a second. I'll just reconnect again. Yeah, no problem. Yeah.
Guys, by the time, if you still have any questions, please put it in the comment section and maybe we can take them up. Yeah, I have just connected. Let's see. Yeah, just 1 second. Yeah, now it is perfect. Yeah, it's visible now. So Yeah, shall we start? Yeah. yeah, you can start. Yeah. So, dear parents, I would just like to give a brief introduction of myself. I'm Jyoti Singh, certified parent coach, and my mission is to empower parents in their parenting journey. Because this is a time when parents usually Sorry to interrupt. feel so much of stressful, and Yeah, this is the time when child needs you. Yeah, Muskan. yeah, sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you. Chandan Yeah, sir yeah, was. not an issue. Sure. Yeah. So, sir, I think we are properly audible to you, sir, now? Okay. There are still some connectivity issues. Sir, are we properly audible to you? या नाउ यू काफी वॉइस ब्रेक हो रही है पता नहीं क्या हो रहा है Okay. Sir, I just wanted to say thank you to you for doing this. I hope it helps a lot of parents जो कि ये देख रहे हैं and maybe एक student too. So जो भी आपने answer करे, it really helped me also a lot. Thank you for doing this. वेलकम वेलकम Yeah, Yes. thank you so much, sir. It was great having you over here on this platform. Thank you, sir. Okay. So, Okay. shall I start, Muskan? Yeah, I'll yeah, just, yeah. I'll just share the screen again. Sorry for the interruption. Really It's sorry. okay, yeah. Yeah. Yeah, it's visible. Can you see my screen? Yeah, it's visible. It's visible. Yeah. So, dear parents, just let me give a brief introduction of myself. I'm Jyoti Singh. I'm a certified parent coach. I'm a mother. I'm a blogger and a YouTuber. So, I'm on a mission to help parents to overcome their parental anxiety during their parenting journey. And I felt that, when our kids are into teens, so career planning, career selection is a very crucial part. So I just want to share five crucial points which we shall consider while planning a career for our child. So these are the five things which we are going to discuss in detail. So let's start up with the first one. The first one is differentiating and understanding career path, career milestone, and career definition. Let us understand what all these terms are. So first, coming back to career destination is nothing but deciding on becoming what do you want, what your child wants to do in his life. फॉर एग्जाम्पल उसे अगर फाइनेंस मैनेजर बनना है और इधर ही wants to go into marketing or he wants to start his entrepreneur journey, so let the child decide what does he want to do in his life. That would be his career destination. The second thing is career milestone. When we talk about the career milestone, these are the steps which your child will take to reach his career destination. So the step will be he would what his graduation degree, his post graduation degree. Does he need to give any entrance test? So these are the steps which child will be taking to reach his career destination. The third point is the career path. Now, the career path is the stream, which your child is going to select after 10, whether he wants to go into commerce, whether he wants to go in science or art. So these are the streams. So why I'm sharing all these terminologies with you? Because most of the time, what we 95% of kids make a mistake by selecting the career path first. After that, they decide on the milestone and then they decide on the destinations. This is a very wrong cycle. First, let us decide what the child wants to do actually in life. Look for his destination. Where does he wants to go? Work out on his milestone and then accordingly select the career path. So just be careful while designing the career destinations for your child because selecting a right career path
is important, which is only possible if you know where to go. For example, your career destination. So sit with your child, brainstorming कीजिए कि what actually he wants to do in his life, and then accordingly you can create a plan, and that would really help him, आगे जाके वो कंफ्यूज नहीं होगा कौन से स्ट्रीम में जाऊं क्या करूं, बिकॉज ही नोज वेयर डज ही वांट्स टू रीच. So this is very crucial part of career planning. The second important thing is let us differentiate between genuine interest, infatuation, and ability. When we talk about infatuations, infatuation is nothing but our attraction towards a specific career because maybe वो trendy है, maybe it has more money, power, fame, बहुत जल्दी success है. तो usually even us parents हम infatuation में हो जाता है, we feel like okay let's go, ये ज्यादा trending चल रहा है, मेरे friend के बच्चे ने ये किया, he is highly successful, let's go for this career option. So this is infatuation. When we talk about the genuine interest, it is nothing but the person, the child is able to take action or give his effort to reach to the destination. कई बार क्या हो जाता है हमारा infatuation होता है particular career के लिए, but yes, if child is able to put efforts 100% and he is ready to learn all the skills, then that would be converted into the genuine interest. And when we talk about abilities, are nothing but an inborn talent and skill. Yes, skills and talents can be acquired and can be learned also. When we talk about Lata Mangeshkar or Sachin Tendulkar, they had an inborn talent, उनमें वो skills थे. But nevertheless, they have again worked on the skills, उन्होंने refine भी की है, and now you can see where are they up to. So we all have certain abilities, we all have certain skill set. Only thing is we need to learn and refine it according to our career path and career choices. So selecting a career based only on infatuation is like castle in the air. Abilities become the foundation, and when we talk about the genuine interest, it becomes a support factor for building a premise for a great career. So work on your skill set, work on your abilities. Believe me, you have a long way to go. The third important thing which I would like to discuss is don't be part of the herd on basis of the trend. Trend is very much misleading and trend is risky. Now, I would like to share an example over here. When I was doing my MBAs, during that time, MBA was very much in trend. If a person had done an MBA, he used to have that, उसकी वो वैल्यू हो जाती थी, he is a 10 lakh or 5 lakh he has invested, तो एक person की खुद की भी एक वैल्यू करने लग जाते थे लोग. But believe me guys, sometimes trend is misleading also and it's risky because when we go according to trends, there are small demands and the supply is huge, and that would lead to unemployability. So before going behind the trend, just research about everything, research about job opening, what are the market study, do the market studies, because I have seen like lots of MBA, like from a couple of my friends also who had done MBA in finance and they were offered marketing job. Why? Because finance job was not available for them. So sometimes we go with the trend, the supply is very high and the demand is low, which would lead to unemployability. So just study about the market, don't just blindly follow the trend. The fourth important point which I would like to share is academic performance defines a career. It's truly a myth. I tell you because in our Indian education system, still today the grades have become a foundation reason for selecting stream. If you have lower grades, you cannot opt for science. या फिर अगर हम पहले ही judge कर लेते हैं, if a child is having about 85 or 90%, he will go in science stream. Below that, कॉमर्स एंड उससे भी कम है तो लेट्स पुट हिम इनटू आर्ट्स. तो ये हमें एक ये मिथ्स हमारे माइंड से निकालना होगा बिकॉज right now all the like expertise, in fact 90% kids I have seen opting for arts because that's their interest, उनके वो skills है, उनका वो passion है, so they are opting for that career also.
So research has also shown that significant percentage of students changing their subjects in graduations or post graduation. Most of the time, the students who are opting science, but जब वो +2 में आते हैं and they see the kind of pressure in the subject, or they are not able to cope up those subjects, and then they opt for changing the subject. So choose your streams very wisely, because if student is not comfortable with the subject that they have chosen, they will be struggling hard 5 to 7 years to cope up with those subjects. And it's a matter of career for your child. So parents, before choosing any streams, look for your child's interest. You can seek the help of the counselors also to check the abilities and skill set. And lastly, I would like to share, be self aware. First thing is, each one of us is unique. We all are different because there is no other than your child in this world. So everyone has his or her interest, values, and aptitudes which set them apart from others. Our personality, our type, our interest, everything make us better. The only thing is your child has to be have that learning mindset. The moment your child has that learning mindset, believe me, they are the best in the world. They can do anything. And another important thing is, let your child believe in himself. Most of the time हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर इतने ज्यादा हो जाते हैं, the child start losing the self esteem. So take care of your child self esteem. आप उन्हें मोटिवेट करते रहिए, उन्हें हेल्प करते रहिए, be always there with them, because when we talk about career, हम बच्चों को छोड़ देते हैं, now you see, you decide. So don't let the throw of the dice decide your child's career. It must be done cautiously and shall be driven by an approach of balancing intuitions with the facts. So that's all from my side, Muskan. So, dear parents, lastly, I would like to conclude that choose the career wisely, because ये उनके lifetime का सवाल है. So one mistake can lead to, it can lead them to into depression, anything. So just you can seek the help of the counselors. They are there to help us, guide us. So that's all from my side, Muskan. If any parents have any query, then you can let me know. I would love to address that. Thank you so much for such a nice presentation. If you guys have any questions, please feel free to put it in the comment section. We will wait for another 1 minute. Otherwise, we'll just end the webinar. So, yeah, we are waiting for 1 minute. You guys can put your questions and both of you can answer it. Yeah. People have asked that can they learn programming in 3 months? I don't think there's a time I think limit. Chandan sir can answer this. Chandan sir, you can take it. See, see, it's not a rocket science. Of course, 3 month and 1 month, there is a no particular time limit. सीखने के लिए तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो 2 दिन में भी बहुत कुछ सीख जाते हैं. It's all about your dedication, कि how quickly you are grabbing. क्योंकि एक बच्चों में 2 टाइप के लर्निंग कैपेसिटीज होते हैं. एक बच्चों को मैंने देखा है कि वो दिन भर में 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं, सफिशिएंट इनफ. कुछ बच्चे होते हैं वो 24/7 पढ़ते रहते हैं, बट फिर भी उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है. सो इट मैटर्स ऑफ योर स्किल सेट ऑल्सो, इट मैटर्स ऑफ योर ग्रास्पिंग पावर ऑल्सो, इट मैटर्स ऑफ योर टाइम डेडिकेशन. क्योंकि हर चीज का एक्सेसिव भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, आई नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, वो आप वहां पे कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हो कई बार. सो अब वो क्या होता है, जब आप एग्जॉस्ट होते हो तो जो भी सीख रहे होते हो वो भी आप भूलते चले जाते हो. सो हैव अ प्रॉपर टाइम रूटीन. डोंट पुट योर सेल्फ इन टू अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम कि नहीं मुझे 3 महीने में सीखना है या 6 महीने में सीखना है. जितना आप ग्रास्प कर सको पर डे रूटीन पे, आप उतना उस चीज को फोकस करो. गो विद दैट वे. It will take 1 month, it will take 2 month, it will take 3 month और 6 month also. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. 1 साल भी लग सकता है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ग्रैब, बट मैटर्स ऑफ स्किल सेट. There is another thing that I must say.
कि most of the time students what's happening कि they are focused on कि नहीं मुझे डिग्री मिल जाए मैं सीख लूं सीखना और डिग्री लेना बोथ आर सेपरेट थिंग आप क्वालिफाइड तो हो जाते हो क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अब अभी का जो करंट मॉड्यूल है करंट जो सिस्टम चल रहा है कोई फेल नहीं होता everyone get degrees get qualification but it's matter of your skill set क्योंकि जब when you will enter into a professional life no employer will ask you how much marks you will got sorry how much marks you got in your academics and how what grade you got in your programming certification. They will ask you about the practical knowledge, practical learning and practical questions only. So try to get as many as practical knowledge you can and don't limited yourself into a particular time frame. It will take 1 month also, it will take a 6 month also. So focus Nice. on learning part rather than duration. Okay. So I think we have taken all the questions. We have already crossed the time limit. Thank you so much to both of you for doing this. I hope it really helps a lot of parents. Thank you so much, Chandan sir, for your guidance. Thank Yeah. you. Thank you Most so much, welcome. Muskan. Thank you for Yeah. inviting also. Yeah, Yeah. it's our pleasure. And we will see you in the next webinar, guys. And if you have any questions, you can also connect with them maybe on LinkedIn and you can ask your questions directly from them. And we Yeah, will see you in the next webinar. Bye bye, guys. sure. Yeah. Thank you so Bye much. bye. Bye bye.